हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एवरीवन खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। प्रथमे मोर यूट्यूब चैनल खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशनल तरफ समस्त को नववर्षर अभिनंदन। पूर्व भिडियो मानक आम अष्टम श्रेणीर सब्जेक्ट इंग्लिश को छाड़देले समस्त विषय प्रैक्टिस क्वेश्चन विषय आलोचना करते। जो मैंने पूर्व भिडियो गुड़िक देखी नथिले भिडियोर डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिखाई देखिनेब। आज भिडियो आम आलोचना करवा इंग्लिश प्रैक्टिस क्वेश्चंस एवं तार आंसर विषय। भिडियोटी भल लगे लाइक टे करदेव। जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छ हृदय सब्सक्राइब करनेब। ताहले भिडियोटी स्टार्ट करवा। क्लास 8 विषय होची इंग्लिश। देखिबा क्वेश्चंस। एठी प्रथम क्वेश्चन अछि रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कोआइछि तळे दिथवा पोएम को पढो एवं क्वेश्चन मानकर आंसर दियो। पढ़ीनेवा पोएम टी को बोट सेल्स द रिवर एंड शिप सेल्स ऑन द सीज बट क्लाउड दैट सेल्स अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर फार देन दीज देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स एच प्रिटी एच यू प्लीज। तापरे बट द बो दैट ब्रिज हेवन ओवर द टॉप्स ऑफ ट्रीज एंड बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रिटियर फार देन दीज। एवं देखने क्वेश्चंस कौन दिखाई कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। प्रत्येक क्वेश्चंस एक मार्क लेखे रहिबो। ए रे अछि शिप सेल्स ऑन द डैश। ऑप्शन रे अछि रिवर्स सीज डैम स्ट्रीम्स। एठी ठीक उत्तर हो ऑप्शन 2 सीज। तापरे बी देयर आर ब्रिजेस ऑन द डैश। ऑप्शन डी अच्छी रिवर्स सीज कैनाल्स पॉन्ड्स। ठीक उत्तर टी हम ऑप्शन 1 रिवर्स। तापरे सी अच्छी डैश बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। एटी ऑप्शन गुड़िक अच्छी प्रथम अच्छी द बो द क्लाउड्स द ट्री द अर्थ। एटी ठीक उत्तर टी हम ऑप्शन 1 द बो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क रहिबो। ए रे अछि बोट्स एंड शिप्स आर कंपेयर्ड टू डैश। उत्तर हबो बोट्स एंड शिप्स आर कंपेयर्ड टू क्लाउड्स। बी रे अछि रिवर्स एंड सीज आर कंपेयर्ड टू डैश। रिवर्स एंड सीज आर कंपेयर्ड टू स्काई किंबा हेवन। तापरे सी रे हबो रेनबो इज कंपेयर्ड टू डैश। उत्तर हम रेनबो इज कंपेयर टू ए रोड। तापरे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए अच्छी हाउ आर क्राउड्स कंपेयर टू बोट्स। 2 मार्क अच्छी गोटे क्वेश्चन रे हाउ आर क्लाउड्स कंपेयर टू बोट्स। उत्तर हम क्लाउड्स आर कंपेयर टू बोट्स बिकॉज दे सेल अक्रॉस द स्काई। एटा आंसर हो। तापरे बी रछि व्हाई इज रेनबो कंपेयर टू ए रोड। 3 मार्क रहिबो। क्वेश्चन अछि व्हाई इज रेनबो कंपेयर्ड टू ए रोड। एटी उत्तर हो द रेनबो इज कंपेयर्ड टू ए रोड बिकॉज इट अपीयर्स टू बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। तापरे सी 3 मार्क रही 0 द रेनबो इज द प्रिटिएस्ट ऑफ ऑल हु सेड दिस एंड व्हाई। एटी उत्तर हम द पोएट सेड दिस बिकॉज द रेनबो इज प्रिटिएस्ट फार देन बोथ द बोट्स एंड द ब्रिज ऑन द रिवर। तापर अछि क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 अछि रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पैसेज टी को पढ़ा पड़ो। तापर तले देथिबा क्वेश्चन मानकर आंसर देवा पड़ो। तो तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। एटी अछि मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तले देथिबा 3टी वर्ड को नहीं सेंटेंस तैयार करबा को आइछि। जो 3टा भितरु जे कोनोसी 2टी रो तो एटी देखि नेबा। प्रथम अछि प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट रे हबो पीपल शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तापर अछि सोर्स
द सन इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर अर्थ तापर अच्छी अफेक्ट ये हम लैक ऑफ स्लीप कैन अफेक्ट वन्स हेल्थ ये टाइप वाक्य गठन करने पड़ो तापर क्वेश्चन 3 रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एटी आ गोटे पोएम दिखाई पोएम पढ़ना आई कैन गेट थ्रो ए गेटवे without any key and strip the leaves from the great oak tree. I can drive the storm cloud and shake the tall towers or still through the garden and not wake the flower. Question दिया है answer the following questions प्रत्येक questions एक मार्क रहिबो ए रे अछि Who can get through a gateway? एटी उत्तर होबो The wind can get through a gateway. तापरे बी रछि Who is the narrator of the poem? उत्तर होबो The wind is the narrator of the poem. सी रे होबो What can the wind strip? उत्तर हम लीव्स फ्रॉम द ग्रेट ओक ट्री तापरे डी नेम टू डिस्ट्रक्टिव एक्शंस मेंशन्ड इन द पोएम उत्तर हम ड्राइविंग द स्टॉर्म क्लाउड्स एंड शेकिंग द टॉल टावर तापरे ई रछि व्हाट कैन द वाइंड शेक उत्तर हम द tall towers. एप्रियची name two gentle actions mentioned in the poem. उत्तर हवा stealing through the garden and not waking the flower. तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चंस एटा 3 मार्क लिख रही एटा टिके लंबा रहिबो तापर देखिबा Question 4 Read the paragraph and answer the following questions. paragraph टी पढ़िया पड़ो मुझे paragraph पढ़ुनी तो मैंने पढ़ी नब मु खाली आंसर टा कही दूची क्वेश्चन देखिबा चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क रहइबो ए प्रथम क्वेश्चन अछि हु केम व्हेन कालू विश्ड टू बी रिच उत्तर हबो एठी ऑप्शन बी एन एंजल कम व्हेन कालू विश द रिच तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड कालू टर्न इनटू आफ्टर बिकमिंग ए किंग ऑप्शन डी अछि ए क्लाउड द सन ए बर्ड ए स्टोन एठी ठीक उत्तरटी होबो ऑप्शन बी द सन तापरे What prevented the sun from reaching the earth? Option डी अछि wind, rain, a cloud, darkness. एठी ठीक उत्तरटी होबो ऑप्शन सी ए cloud. Question 5 Identify the tense used in the following sentence and write. एडी कहैछि तळे देइथवा वाक्य मानकरे केउ टेंस व्यवहार हेछि चिन्हट करो एवं लेख बोली कहैछि Question 6 Fill in the blanks with appropriate prepositions. 3 मार्क रही एडु कही शून्य स्थान पूरण कर एक्यूरेट प्रिपोजिशन यूज करी देखने रीता वॉक्ड डैश द गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग एटी हम रीता वॉक्ड अराउंड द गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग तापर अछि सी सेट डैश ए बेंच टू रीड हार बुक उत्तर हम सी सेट ऑन ए बेंच टू रीड हार बुक तापरे बर्ड्स वेर फ्लाइंग डैश द ट्रीज उत्तर हम द बर्ड्स वेर फ्लाइंग एमंग द ट्रीज तापर देखिबा क्वेश्चन 7 complete the sentence or column A by matching with the correct prepositions mentioned in column B
ए कलम रे थिबा शून्यस्थानटा बी कलम रे थिबा वार्ड मानक आनी पूरण कर बोली कुहाउची। प्रथम अछि ए रे अछि द कैट इज हिडिंग डैश द टेबल। उत्तर हबो द कैट इज हिडिंग अंडर द टेबल। तापरे सी विल रिटर्न डैश 6 pm। सी विल रिटर्न एट 6 pm। तापरे distribute the sweets dash the two friends। distribute the sweets between the two friends। तापर देखिबा क्वेश्चन 8 चेंज इनटू एक्टिव। तले देथिबा सेंटेंस टाकू एक्टिव ये रे चेंज करो बाय कहैछि दियाइछि द होमवर्क वाज डन बाय द स्टूडेंट। एटा हबो द स्टूडेंट्स डिड द होमवर्क। एटा हबो राइट आंसर। तापरे क्वेश्चन 9 आइडेंटिफाई व्हेदर द सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव। तले देथिबा सेंटेंस टा पैसिव ना एक्टिव चिन्हट कर बोली कहैछि द मैच विल बी प्लेड टुमारो। तो एटा हबो पैसिव। पैसिव ता तारो करेक्ट आंसर हबो। तापरे 10 रे देछि read the sentence, identify the adjectives and write any 3 of them in the blank space। 3 मार्क रही। तापर 11 नो अछि write the sentence using correct punctuations marks। प्रत्येक 1 मार्क लिखे। तापर अछि क्वेश्चन 12 write a paragraph using the following words। तळे दिथवा वर्ड मानक मधुरु कोनसी गोटे वर्ड को नेकी गोटे पैराग्राफ लिखा पड़ो जो मार्क अच्छी 5 मार्क। वर्ड गुड़ाक अच्छी क्लासरूम प्लेग्राउंड लर्निंग फ्रेंड्स टीचर्स एक्टिविटीज। तापर क्वेश्चन 13 कंप्लीट द फ्लोइंग पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट। ब्रैकेट रे दिया जाइतबा वर्ड मान को व्यवहार करी शून्य स्थान पूरण कर बोली कहैछि। देखि नेबा एठी वर्ड गुडी को अछि प्रैक्टिस टीम रूल्स विनर हेल्दी। एठी अछि स्पोर्ट्स कीप अस डैश एंड एक्टिव। एठी हबो स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी एंड एक्टिव। एठी हबो हेल्दी। तापरे वी लर्न टू वर्क इन ए डैश एंड सपोर्ट ईच अदर। वी लर्न टू वर्क इन ए टीम एंड सपोर्ट ईच अदर। एठी टीम हबो। तापरे रेगुलर डैश हेल्प्स अस बिल्ड स्ट्रेंथ। एटी हो रेगुलर प्रैक्टिस हेल्प्स अस बिल्ड स्ट्रेंथ। तापरे एवरी गेम हैज डैश दैट प्लेयर्स मस्ट फॉलो। एवरी गेम हैज रूल्स। एटी रूल्स हबो दैट प्लेयर्स मस्ट फॉलो। तापरे अछि whether we become a dash or not। whether we become a winner। एटी विनर हो winner or not we should play with honesty। तापरे क्वेश्चन 14 write a paragraph about your teachers in 5 sentence। तमरो टीचर को विषय रे 5टी सेंटेंस लिखिबा को हैछि पैराग्राफ 5 मार्क रो। तापरे क्वेश्चन 15 complete the following letter to your friend on your birthday celebrations by filling the blanks। एटी दिया है ब्लैंक्स पूरण कर पड़ो। डियर शिवानी माय बर्थडे इज ऑन 20th of this month। माय फैमिली इज सेलिब्रेटिंग द ओकेजन्स। माय पेरेंट्स आर गिविंग ए पार्टी। प्लीज जॉइन अस विथ बेस्ट विशेस। तापरे एठी तमरो निजर ना लिखिबो। तापरे क्वेश्चन 16 write an application to your headmaster requesting him to grant 3-day leaves। एरा 5 मार्क रही। 3 दिन छुट्टी पाई हेडमास्टर पाख को एप्लिकेशन लिख बोली कहैछि। तापरे क्वेश्चन 17 complete the notice by choosing the appropriate words from brackets given below। गोटे नोटिस दियाछि। तापरे ऊपरे केतुटी वार्ड देछि ए वार्ड मानकु पूर्ण करी शून्य स्थान पूर्ण करी
नोटिसटा कंप्लीट करबाक पड़िबो। एटी दिया है नोटिस डैश नोटिस डैश रे आमर हम एटी 69 जो दिया है नोटिस नंबर 69 हम एटी तापरे अच्छी डैश आर हियर बाय इनफॉर्म that the school will remain closed for summer vacation from 1st May to 15 June 2025 डैश रे हबो एठी स्टूडेंट हबो एठी स्टूडेंट आर हियर बाय इनफॉर्म दैट द स्कूल विल रिमाइन क्लोज फॉर समर वेकेशन फ्रॉम 1st May to 15 June 2025 तापर अछि रेगुलर क्लासेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम रेगुलर क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम आमर एठी डेट दिया है 16/6/2025 एठी हबो रेगुलर क्लास विल बी स्टार्ट फ्रॉम 16/6/2025 स्टूडेंट आर एडवाइज टू कंप्लीट देयर हॉलिडे डैश जगह हबो एठी होमवर्क एंड स्टे सेफ ड्यूरिंग द वेकेशन एटा थिला आमर अष्टम श्रेणी इंग्लिश एहीपरि भाव में तुम बोर्ड परीक्षा रे इंग्लिश क्वेश्चन गुड़ा आसो आगु प्रैक्टिस कर नहीं आशा करुँची भिडियोटी तुम उपयोगी आसो तो आज एटिकी पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे धन्यवाद।